मेरा नाम अलीज़ा साबिर है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T48 है और आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टिव फ़िल्टर्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अडेप्टिव फ़िल्टर्स। Adapted filters are powerful signal processing tools capable of dynamically adjusting their parameter to optimize performance in various applications. From noise cancellation to channel equalization, they adapt to changing environmental conditions or system characteristics, making them versatile and efficient. नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ अडेप्टेड फिल्टर्स। सबसे पहले नॉइज रिडक्शन, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड एंड थर्ड चैनल इक्वलाइजेशन। Noise reduction adapted filter excel at removing unwanted noise from audio and speech signal, improving communication quality. Second is system identification. They can model and estimate the characteristic of unknown system, enabling efficient control and optimization. Channel equalization. Adapted filter compensate for signal distortion in communication channel, ensuring reliable data transmission. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है टाइप ऑफ अडेप्टेड फिल्टर्स। सबसे पहले नंबर पे है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स FIR। सेकंड पे हमारे पास है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स IIR। थर्ड पे हमारे पास है नॉन लीनियर अडेप्टेड फिल्टर्स। फोर्थ पे है रिकरेंट अडेप्टेड फिल्टर्स। फर्स्ट पे हमारे पास जो है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स FIR filter have a finite number of coefficients, making them computationally efficient and stable. Infinite impulse response IIR filter have an infinite number of coefficients, allowing them to model complex systems with fewer parameters. Non-linear adaptive filter. These filters can handle non-linear system dynamic, expanding the range of application. Recurrent adapted filter. Recurrent filters use feedback to capture temporal dependencies in the input data. नेक्स्ट हमारे पास है द LMS एल्गोरिथम, लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है इनपुट सिग्नल, सेकंड में हमारे पास है अडेप्टेड फिल्टर्स, थर्ड पे हमारे पास है एरर मिनिमाइजेशन। फर्स्ट पे हमारे पास है इनपुट सिग्नल। द अडेप्टेड फिल्टर रिसीव एन इनपुट सिग्नल एंड एन एरर सिग्नल एज फीडबैक। सेकंड पे हमारे पास है अडेप्टेड फिल्टर। द फिल्टर एडजस्ट इट कोफिशिएंट यूजिंग द लीस्ट मीन स्क्वायर्स LMS algorithm to minimize the error minimization. The process continue iteratively until the error is sufficiently small, converging to the optimal filter parameters. नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास द RLS algorithm, recursive least square. The recursive least square RLS algorithm is an alternative to the LMS algorithm, offering faster conversion but higher computational complexity. Matrix inversion. RLS calculate the optimal filter coefficient by performing a matrix inversion at each iteration, which can be computationally intensive. Tracking ability. RLS is better suited for application where the system characteristics change rapidly, allowing the filter to adapt quickly. Memory effect. RLS incorporate a forgetting factor to give more weight to recent data, enabling better tracking of non-stationary environment. Next हमारे पास है adapted filters. Filter structure, adaptation algorithm, parameter tuning, stability analysis. Select first पे हमारे पास है filter structure, selecting the appropriate filter structure such as FIR or IIR based on the application requirements. Adaptation algorithm, choosing the adaptation algorithm like LMS or RLS to balance convergence, speed and complexity. Parameter tuning, adjusting the filter parameters such as step size or forgetting factor to optimize performance. Stability analysis, ensuring the stability and robustness of the adapted filters under various operating condition. नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मैट्रिसेस गिवन है एंड देन उसकी हमने क्या करनी है डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पे हमारे पास है कन्वर्जेंस रेट, सेकंड में हमारे पास है स्टेडी स्टेट एरर, थर्ड पे हमारे पास है ट्रैकिंग एबिलिटी,
4 पे हमारे पास है कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट पे हमारे पास है कन्वर्जेंस रेट, the speed at which the filter coefficient reach the optimal values, steady state error इसकी description है, the residual error that remain after the filter has converged. Tracking ability में हमारे पास है the filter capability to adapt to change in the input signal or system characteristic. Computational complexity इसके हमारे पास description है, the computational resources required to implement and run the adapted filters. Next and last हमारे पास जो है स्लाइड, इसमें हमारे पास क्या है, कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, वर्सटैलिटी ऑफ अडेप्टेड फिल्टर फर्स्ट है, सेकंड है हमारे पास इमर्जिंग टेक्निक्स, थर्ड हमारे पास है रियल टाइम एप्लीकेशन और फोर्थ हमारे पास है कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। फर्स्ट में हमारे पास है कि adapted filter have a wide range of application and continue to evolve to address new challenges. सेकेंड पे emerging techniques, इसमें हमारे पास है कि researcher are exploring advanced algorithms such as deep learning based adapted filter to further improve performance. थर्ड पे हमारे पास है real time application, the demand for adapted filters in real time system like speech enhancement and image processing is increasing. फोर्थ पे है computational efficiency, efforts are being made to develop more computationally efficient adapted filter implementation for embedded system.